Uh, so many thanks to HSSC for organizing this webinar and giving me opportunity for presenting my topic. And as you all know that this is the era of evidence-based medicine, and this is the era of whatever we are doing that should be documented. So based upon that only I have chosen this topic, and this is the proper what is research, and how we can do research, and what kind of you can say एक second थोड़ा सा technical थोड़ा सा ठीक कर लेता है इसको. So this again same problem is there कि slides is not moving. It's moving in my computer but not on the display. Again I'm starting. Just 1 second. सर स्लाइड शो पे जाइए, स्लाइड शो पे हो जाएगा. No, I'm joining right. Yeah, now it's moving. Sorry for the technical glitch. I'm extremely sorry. So this is everybody is now talking about how we can do evidence-based research, and this is a need actually. Whatever we are doing, that should be documented, and that should be implemented for the benefit of the patients, and that should be benefit for the society. So basically, we have to do research, and sometimes the after seeing this word research, problem come in mind. This is a very kind of big thing that a normal person cannot do. For research, everybody has to be scientist. For research, there is a huge requirement of funds. So this kind of thoughts are coming. So I am trying to do this seminar to just motivate the new minds that research is not a big thing. If you start thinking that you have to serve the society, and you can do better for health services. So just whatever you are doing at your home, suppose you are writing a poem, or you are making food for you. So whatever you are doing, so you are doing some technical procedures. So same thing with that. Whenever you are going for research, you have to do some systemic procedures and techniques that only you have to follow. So there are some basic things that it is a quest for knowledge through diligent search or investigation or experimentation aimed at the discovery and interpretation of new knowledge. So we are trying to give new knowledge to the world, or we are trying to give interpretation of any new knowledge. So that is the only research. If you are keeping in your mind that you have to do, then if it is you are having the inquisitive mind, if you are having the mind which wants to give something to society, then you just start the research and you can do it. And this is just a systematic body of procedures and techniques applied in carrying out investigations or experimentations targeted at obtaining new knowledge. And
whenever you are seeing, we are seeing there is a biomedical research and health research. Biomedical research is nothing but the biological and medical sciences research, and health research is combined with that. This is having, suppose if we are talking about health, so we have to think about the agricultural science, we have to think about the environmental science, we have to think about uh, the as an environment. अभी भी हमारा G20 का जो मोटो था उसमें सबने देखा भी था कि one world, one health, one family and one future. So kind of this. So health is also taking account all the things in the mind. And this is our types of health research. If we are seeing that is public health research, laboratory research and clinical research. पब्लिक हेल्थ रिसर्च में क्या होता है कि जहां पे भी हमें हेल्थ पॉलिसी और सिस्टम रिसर्च बनाने होते हैं, या कोई ऐसा एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च करना है, या कोई मैथमेटिकल मॉडलिंग करना है, तो उस तरह की जो पब्लिक हेल्थ में काम आएगी एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस में काम आएगा, एंड इन दैट those research are named as public health research. And whatever we are doing in the laboratory, that means if we are putting some cell linings and we are giving the medicine and seeing the result of that medicine on the cell lining in the laboratory, or we are doing any research on mice or some animals, so this is comes under the laboratory research. इसमें genomic research करते हैं कि if we are giving some medicine and what genomic pathway is taking for that, some chemicals is, how the chemicals is going inside the cell and what changes is going to do. So this kind of laboratory research are there. Then there is a clinical research. Clinical research, again, there is a very huge process in which sometimes a new medicine is tested, and sometimes a drug discovery is there. And we have seen just within a period of 2-3 years before, we have seen the vaccines. So how the vaccines are done with the clinical research, and the time period was reduced because there was a critical emergency, and for that purpose that research was used that the vaccine is can be implemented to the common public. So there are phases are there, and that phases were reduced, and this is just an example of clinical research. And one is coming, that is the basic research. So in that basic research, it is just the research which is having some theoretical things. It provides scientific reasons for the occurrence of a particular event or process or phenomena. It is not concerned with solving any practical problems or immediate interest. The outcome of basic research forms the building blocks for applied research. Once the basic research has been done, then that is forming the basis for the applied. That means we can now go for application of that research to the common public. For example, does caffeine ingestion increases carbohydrate metabolism or not? Then comes the applied research. So whatever that we have done in the basic research, so that is now which has to be applied. So systematic study to gain knowledge or understanding necessary to determine the means by which a recognized and specific need may be met. It is basically problem oriented and is directed towards the solution of an existing problem. Done under field conditions, applying knowledge gained from basic research. जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा, does caffeine ingestion is giving some problem or not? Then some basic classification is there, that is quantitative research and qualitative research. Quantitative research is where involves the collection of data so that information can be quantified and subjected to the statistical treatment in order to support or refute alternative knowledge system. यहाँ पे हमें सिर्फ उसको हम क्वांटिफाई कर रहे हैं कि ये इफेक्टिव है कि नहीं है, ये अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो वहाँ पे statistical analysis होती है, and that is comparison is there. And एक होता है qualitative analysis. Qualitative analysis में क्या होता है कि qualitative research focuses on interpretation of phenomena in their natural settings to make sense in terms of meanings people bring to these. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि whenever we are going for any kind of survey, जहाँ पे पूछते हैं कि खाना अच्छा लगा कि नहीं लगा, so we are giving ratings, है ना. So वो सब जो होता है, that is called the qualitative research. In that this type of research involves data collection of personal experiences, introspection, stories about life, interviews, observations,
इंटरेक्शंस एंड विजुअल टेक्स्ट। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, बल्कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज और एकदम, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे हमें सिर्फ हाँ या ना में आंसर चाहिए, या वॉट एवर वी हैव डिजाइन क्वेश्चंस on that only we ask answers from the public or patients. But in qualitative research, it is the way of talking, and it will the questions will be decided by the interviewer and the person who is giving the interview. So वहां पे क्या होता है, वहां पे ओपन एंडेड क्वेश्चन चलते हैं। अब आता है एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च। तो वहां पे बहुत सारा हमें कुछ सोचना पड़ता है कि हमारा टाइटल ऑफ द स्टडी क्या होगा, हमारी उसमें ब्रीफ समरी ऑफ द प्रपोजल हम लोग क्या दे सकते हैं, देन हमारा जो स्टडी है उसका बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, फिर जो भी स्टडी करने जा रहे हैं वो उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ऐसा तो नहीं है कि हम जो स्टडी करने जा रहे हैं एंड वी आर प्रपोजिंग दैट स्टडी दैट हैज ऑलरेडी हैज बीन डन, उससे अच्छा रिजल्ट उसका पब्लिश हो चुका है। So it should not be repeated. It should be new. It should be it should be applied to the common public. So that kind of criteria are there. But it should be that is बोलते हैं ना finer criteria. उसमें बोलते हैं कि it should be feasible. It should be new. It should be applicable. And we should not repeat the old research. And review of literature हमको help करता है कि हमारा जो स्टडी है उसको हम स्टडी को कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन सा मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज पिछली जो स्टडीज हो चुकी हैं दैट इज आल्सो गिविंग अस द आइडिया कि हाउ वी कैन प्रोसीड and what methods they have used, what methodology they have used, and what kind of questionnaires they have used, what kind of settings they have used. And suppose if we are talking about medicine, so which medicine they have used, and that medicine we should not repeat. So this review of literature is very much important for any kind of research. Then objectives, हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी, बस ये था यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ। देन मटेरियल्स एंड मेथड्स, वर्क प्लान, और उसमें फिर कोई एथिकल इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज वी आर इफ यू आर डूइंग रिसर्च ऑन अ पब्लिक, ऑन कॉमन मैन, कॉमन पर्सन, तो वहां पे कोई एथिकल इश्यूज तो नहीं है, उसका लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं हो जाएगा, उसको कोई नुकसान तो नहीं करेगा, उसमें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ जाएंगे। सो दैट दोज एथिकल इश्यूज फॉर एनी रिसर्च, if we are as we are doing in the research in the medical colleges, so ethical issues is very important for any research. And then there is a budget details, then there will be references, then will be informed consent document, that is jahan pe bhi hum we are taking the consideration of the subject, so that subject should be informed. So that is called the informed consent. उसमें उसको बताते हैं कि आप इस रिसर्च में पार्ट ले रहे हैं, ये रिसर्च ऐसे प्रोसीड होगी, इसमें ये मेडिसिन दी जाएगी, ऐसा रहेगा, ऐसा करके तो काइंड ऑफ उसको पूरा इन्फॉर्म करने के बाद में वी आर टेकिंग कंसेंट फ्रॉम इट. Then there is a questionnaire. What kind of questionnaire we are going to put? Whatever questionnaires we are going to put, that should be valid. ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई क्वेश्चन बना लिया है, कुछ भी पूछ लिया, so that is not a proper research protocol. So we have to put questionnaires, methods, everything as per the protocol only. Then only the research will be a good research. So these are the cardinal steps for preparing a research protocol. Number one, we can see the identification of research problem. What questions are coming in the mind, and that we can define a problem. Then there will be review of literature. After that there will be develop research questions and or hypothesis कि हमारी जो सपोज हम कोई मेडिसिन देने जा रहे हैं वो मेडिसिन उसमें काम करेगी तो क्या होगा, नहीं करेगी तो क्या होगा. तो this is having two kinds of hypotheses we are making. That is called, one is कि if we are giving such medicine to the such patient, there will be no difference after giving the medicine, तो उसको बोलते हैं null hypothesis. And if you are telling that after giving this medicine the patient will improve, so this is kind of alternate hypothesis. So this kind of hypothesis should be made. After that we have to determine appropriate research design, है ना. डिजाइन बनाने के बाद we have to prepare work plan and data analysis plan, and that after that we have to specify ethical issues that may arise, then the budget, and same after everything has been done then there should be dissemination of research. हमको उसको करना है, and after that we have to write proposal summary. Mandatory steps before writing the protocol. There are some mandatory steps: planning and defining research problem, development of research questions, working hypothesis,
is best frame using Pico format. Whenever we are any question is coming to our mind, so we have to go. There are some formats are there. One of the format is Pico format. Pico में क्या होता है? That is population or patient or problem or person. तो यानी उस जो हमारा हाइपोथेसिस बन रही है उसके बेस में पॉपुलेशन हो, पेशेंट हो या कोई प्रॉब्लम हो या पर्टिकुलर पर्सन हो. देन आई इज फॉर इंटरवेंशन, यानी हम उसमें अपना क्या इंटरवेंशन करने जा रहे हैं. तो दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. अभी हम लोग ये भी बात करेंगे व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च आर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च आर ऑब्जर्वेशनल रिसर्च. सो वो सब अभी डिस्कस करेंगे, बट दिस इज जस्ट दिस आई एम गिविंग कि वहां पे इंटरवेंशन हम लोग क्या दे रहे हैं, दैट शुड बी देयर. एंड आफ्टर दैट कंपैरिजन शुड बी देयर कि वट एवर इंटरवेंशंस वी आर गिविंग दैट शुड बी कंपेयर्ड. कंपेयर करने के लिए हमको वहाँ पे कुछ कंट्रोल डालना पड़ेगा. कंट्रोल इन द सेंस कि मतलब कि हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं, उसके साथ या तो कोई मेडिसिन नहीं दिया या कोई अदर मेडिसिन दिया, तो वो हमारा कंट्रोल बनता है. तो दैट रिजल्ट शुड बी कंपेयर्ड एंड आफ्टर दैट देयर शुड बी आउटकम मेजरमेंट. तो वहाँ पे आउटकम भी कुछ आना चाहिए. सो दैट इज द रिसर्च क्वेश्चन, हाउ इट कैन बी डेवलप. और उसमें हमारा जो वट एवर वी आर डूइंग वी आर गोइंग दैट शुड बी स्मार्ट. स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक. जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, एम्स है, वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए. एंड दैट शुड बी मेजरेबल. वो उसको हम मेजरेबल हो, हम लोग दिखा सकें रिजल्ट कि हाँ ये इसमें इतना रिजल्ट आया. क्वांटिटेटिव हम लोग रिजल्ट दे सकें. एंड दैट शुड बी अटेनेबल. ऐसा कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव ना हो जो हम लोग अटेन ही ना कर पाए. तो दैट शुड बी अटेनेबल. एंड नंबर 4 is that should be realistic. And number 5 that is time bound. ऐसे नहीं कि 20-25 साल लग रहा है. वो should be time bound. हमें बताना पड़ेगा before starting of the research कि हमारा इस टाइम में 6 महीने में 3 महीने में we can show these results. So keeping in the mind we have to proceed further. इसमें भी हमारा जब हम लोग स्टडी डिजाइन करने जा रहे होते हैं तो that we have to think about the types of study, which kind of study this is. That is, it may be a qualitative study, it may be quantitative study, it may be descriptive analysis we are going, or we are going only for observation. And study design, what kind of study design is we are going to choose, whether it is a case control study, only it's a case study, or it's a cohort study, or it's a randomized control trial, or it's a factory trial, or it's a clinical trial. So what kind of design is there? And what is study area? Study area means where we are going to study this research or whatever we are going to do. जैसे सपोज हम लोग अपना, अगर हम कलकत्ता की बात करें तो हमारा वो कलकत्ता में सॉल्ट लेक में स्टडी करने जा रहे हैं. दैट इज द स्टडी एरिया. एंड स्टडी सेटिंग में मतलब कि हम लोग कलकत्ता में हमारा जो इंस्टीट्यूट है, सपोज नेशनल इंस्टीट्यूट, और उसमें जो हमारा ओपीडी है, सपोज माय ओपीडी इज पीडियाट्रिक ओपीडी, सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट पर्टिकुलर स्टडी सेटिंग. ये हो गया. Study period should be defined. That means it may be 3 months, 6 months. We have to see the outcomes and we will compare that outcome. So we have to disclose this thing in the very beginning. Then study population. In what population we are going to study? 1,000 persons are there, 500 persons, and after that we have to calculate the sample size. Sample size calculation is again dependent upon कि what previous research has been done. जो भी पुरानी रिसर्च हुई होती है तो उसको देखने के बाद हमें वो समझना पड़ता है कि इतने पब्लिक पे इतना रिसर्च हो चुका है, तो हमारा जो स्टडी पॉपुलेशन है, जो हमारा सैंपल साइज है, वो 30 रहेगा कि 60 रहेगा. दैट इज अगेन कैलकुलेशन बेस्ड एंड दैट शुड बी डिसाइडेड. देन देयर आर सैम्पलिंग टेक्निक्स. सैम्पलिंग में भी आप रेंडमाइज सैम्पलिंग कर रहे हैं कि नॉन रेंडमाइज सैम्पलिंग कर रहे हैं, बट रेंडमाइज सैम्पलिंग इज गुड. एंड आफ्टर दैट कि what persons we are going to take part in the studies, that should be having some selection criteria कि उसमें inclusion and exclusion criteria होना चाहिए. Inclusion criteria मतलब कि जहाँ पे suppose हम बेबीज को ले रहे हैं, उनकी उम्र क्या होगी, कौन सी डिजीज को लेंगे, कौन सी डिजीज को नहीं लेंगे. दैट इज गोइंग फॉर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. अगर किसी को बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल चेंज हो गया है, पैथोलॉजिकल डिजीज हो गया या बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसको हम अपनी स्टडी में नहीं लेंगे. सो बेस्ड अपॉन दैट ओनली we have to choose the subjects for our study. So that is called selection criteria. And after that there is study tools and techniques. What study tools and techniques? It may be questionnaire, it may be some scales. So whatever scales or questionnaires you are going to choose, that you have to again define and you have to select. And the study tool should be proper and should be valid and reliable. Mind it. If it is not valid and reliable, again your study is not valid and reliable.
एंड स्टडी वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। हमारे स्टडी वेरिएबल्स हम लोग क्या ले रहे हैं, BMI कंसीडर कर रहे हैं, एज, सेक्स और रिलीजन और whatever variables are there. So based upon suppose BP है और किसी का कोई हम लोग IgG ले रहे हैं, IgG दे सकते हैं, या कोई भी ऐसा बायोकेमिकल टेस्ट हो सकता है और USG टेस्ट हो सकता है और एक्सरे और एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट वेरिएबल्स में हम लोग ले सकते हैं. And then there is a operational definition कि suppose whatever we are disease or anything we are going to do, so the research, so that should have some operational definition. Suppose for example if we are going to study for hypertension, तो hypertension किसको कहते हैं? Hypertension में suppose 120/80 अगर किसी का BP है तो वो hypertension नहीं है. Hypertension होगा तो क्यों होगा? If it is systolic is 140 and diastolic is 90 जा रहा है, then it is person is going above that, it is going towards hypertension, and that should be age specific. So this is kind of operational definition. Then plan of data collection, how we will collect the data. Again I will say some about data collection, I have kept in the slides. Then the study plan and the statistical analysis plan. So these are the some material methods. अब आता है कि data, whatever data we are going to collect, so this what kind of data is there. So छोटा छोटा slides को जल्दी जल्दी लूंगा मैं. Data क्या होता है? It's a plural terminology and the singular term is that is datum. Data is the collection of information. It is the raw information from which statistics are created. So अब इसमें problem क्या होता है कि suppose we are doing any clinical research, so what kind of data we have to collect? Whether it is a qualitative data, it's a quantitative data, it's a grouped data, तो बहुत सारा इसमें आता है. तो वो इसको देखते हैं ये होता है क्या actually. Sources of data हो सकता है we through the experiments, through the surveys and through the records. Experiments जैसे हम लोग अपनी लैब में करते हैं और surveys we are going for epidemiological studies and by trained teams, and those teams are collecting some data, that is surveys, and records that is previously collected data, we can use it. So these are the sources of data. And before going to that we should understand something, use terminology that is called statistics, variables, data, information, and intelligence. Statistics is the scientific methodology of decision making from collected data or information. ठीक है, तो हमने whatever data has collected, कुछ भी ऐसा हम लोग प्रेजेंट कर देंगे तो वो रिसर्च नहीं हो जाएगा. तो उसको हमको साइंटिफिक मेथड में जो कि डिसीजन मेकिंग में काम आ सके, कहीं कंपैरिजन हो सके, तो ऐसा डेटा थ्रू द स्टैटिस्टिक्स कि नाउ इट वी कैन शो दैट इज इफेक्टिव, उसका इफेक्टिवनेस, एफिकेसी वी कैन शो, तो वहां पे काम आता है. और अगर हम लोग ऐसा स्टडी कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें खाली सिंपल डेटा देना है और बताना है कि इतना मेल, इतना फीमेल, या इतने पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, दिस पर्सन आर नॉट सफरिंग फ्रॉम डिजीज, तो दिस डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो इट मे बी अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इट मे बी अ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? इट रिलेट्स टू ऑर्गेनाइजेशन एंड समराइजेशन ऑफ द डेटा. Describes characteristics of a population. Through the charts, through the graphs and tables, we can define it. This is only descriptive. यहाँ पे कुछ भी हम लोग एनालिसिस नहीं करने जा रहे हैं ऐसा कि वहाँ पे कुछ इन्फ्रेंस निकाल सके. बट वंस वी आर गोइंग फॉर द इन्फरेंशियल, उसको बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स. दैट इज इट रिलेट्स टू गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पॉपुलेशन फ्रॉम अ सैंपल. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स are called variables. They vary from person to person. For example, age, place to place, temperature vary कर सकता है, and object, shape और color अलग अलग हो सकता है. So the things which we are going to measure in the research, उनको हम लोग बोलते हैं variable. And variable again can be simple variable और composite variable. Simple variable मतलब simple की वो एक single component है, जैसे weight, height हो गया. But once it is two simple variables are joining and giving something, उसको बोलते हैं composite variable. तो वहां पे क्या होता है? सपोज BMI, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, वहां पे क्या होता है? हाइट, वेट, स्क्वायर, सबका एक कंपोजिशन बन रहा है, कंपाउंड, तब जाके वहां पे आ रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कंपोजिट वेरिएबल. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल. वेरिएबल्स व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली नोन एज क्वालिटेटिव वेरिएबल. फॉर एग्जांपल कलर, रेजिडेंस, etc. Variables which can be measured numerically is known as quantitative variables, like age, weight,
ब्लड प्रेशर, ये सब जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल। फिर आता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है कि वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन और इज ए consequence of other variables is known as dependent variable. For example, health status depends on how we regular do exercise, use of services, or any medicine we are taking. So that means it is dependent upon something other. ठीक है? So that's why it is known as dependent variable. और independent variable क्या होता है? It is not influenced by any other variable in study. What वहां पे उसमें डिपेंडेंट नहीं है. इट कैन बी मैनिपुलेटेड एंड मे नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट. आउटकम ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जो हम लोग जो डिजीज पे काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं आउटकम ऑफ इंटरेस्ट. जैसे एज, हाइट, वेट जो होता है वो एक तरह से यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. फिर होता है लेटेंट वेरिएबल एंड random variable. The variables which cannot be measured directly, but it is assumed to be related to a number of observable variables. For example, bright student, where brightness cannot be measured. So this is latent variable. And random variable क्या होता है? If the value of a variable cannot be predicted in advance, then variable is referred to a random variable. For example, in tossing a coin, the outcome may be either head or tail. जहाँ पे वो change हो रहा है, जहाँ पे वो हम लोग उसको predict नहीं कर सकते हैं, that is called random variable. This kind of terms, whenever you will see any kind of study, you will see this kind of terms are coming in the mind. Information intelligence, whenever any data is collected, that gives the information and that ultimately gives the intelligence, and that can be used by the policymakers to making decisions. Classification of data, again this is qualitative or quantitative. Qualitative में क्या होता है? It is also known as enumeration data, when particular characteristics cannot be measured but can be expressed in frequency. For example, sex, religion, birth, death, etc. One can't measure males and female sex but can be expressed in frequency. Quantitative data क्या होता है? It is also known as measurement data when both characteristics and frequency is measured. Example, one can measure weight, characteristics, for example 65 kg, as well as frequency, like how many persons are there in weight ranging between 60 to 65. इसी को हम लोग कर सकते हैं ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा भी कर सकते हैं. और क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट. कंटिन्यूअस डेटा मतलब कि जहाँ पे पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद जिसको बोलते हैं द डेटा फॉर विच एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज एग्जिस्ट. फॉर एग्जांपल वेट कैन बी 62.3456, दैट मींस अनलिमिटेड नंबर्स, है ना, बट इट इज रिपोर्टेड एज 61. तो वहां पे वो कंटिन्यूअस डेटा था. डिस्क्रीट डेटा क्या होता है? डिस्क्रीट मतलब एग्जैक्ट नंबर्स में मिलता है ना. द डेटा फॉर विच a limited number of possible values exist, always expressed in a whole number and not in fractions. Suppose number of players needed for basketball team is 10. It cannot be 10.5, 10.345, and so this is the example of discrete data, जो exact data है वहाँ पे मतलब. So these kind of terminologies are used in the research and statistics. प्राइमरी डेटा वो होता है जो कलेक्टेड बाय द रिसर्च पर्संस देमसेल्व्स, खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं और वहां पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है और हम उसको ये लोग यूज कर रहे हैं. जैसे कोई हमारा नेशनल सैंपल सर्वे में हुआ हो, उसका डेटा यूज कर रहे हैं, या कोई डेटा हमारा हॉस्पिटल में पहले से था, उस हॉस्पिटल डेटा को हम लोग यूज कर रहे हैं. दैट इज द काइंड ऑफ दिस सेकेंडरी डेटा. देन इज ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा मतलब क्या होता है कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग अ बिग स्टडी, तो वी जस्ट ग्रुप द डेटा, यानी हम को एक ग्रुप बना के, सपोज केजीज वेट है तो 50 to 55 केजीज के कितने लोग हैं, 60 to 65 केजीज के कितने लोग हैं, तो एक ग्रुप में हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. अनग्रुप में क्या होता है? सपोज 10% है, उनका सबका वेट अलग 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 लिख दिया, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन. बट जब हम लिखेंगे 50 to 55 के 5% है, 60 to 65 के 2% है, तो दिस इज काइंड ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द डेटा. नंबर है हार्ड डेटा एंड सॉफ्ट डेटा. हार्ड डेटा विच कैन बी यूजली डिस्प्लेड ऑन ए कंटिन्यूअस स्केल डिजिटल रीडआउट और प्रिंट आउट टेकन फ्रॉम द मॉडर्न मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सॉफ्ट डेटा क्या होता है? एनी सब्जेक्टिव मेजरमेंट विच हैज मोर पोटेंशियल और बायसनेस ऑन द पार्ट ऑफ ऑब्जर्वर. एग्जांपल, इन इवैल्यूएशन ऑफ द पेन ऑफ द कैंसर पेशेंट, हिज मूड, एबिलिटी ऑफ वर्क, द डेटा जनरेटेड आर सॉफ्ट एंड सब्जेक्टिव. अब उसको कितना आराम मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, पेन रिलीफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये जो सॉफ्ट डेटा है इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मेरा अगली स्लाइड में आएगा.
इसको हम लोग कैसे स्टैटिस्टिक्स में यूज करेंगे, है ना, तो वो भी जल्दी दिखाता हूँ। और आता है क्रॉस सेक्शनल डेटा, यानी एक क्रॉस सेक्शन मारा और एक पूरा उठा लिया, तो यानी एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में वो डेटा कलेक्ट किया गया है। टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन में कलेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम सीरीज डेटा और लॉन्गिट्यूडनल डेटा। अब whenever we have collected the data, how will we present this data? We can present in the form of text, we can present in the form of table, and we can present in the form of figures. This because data whenever we are presenting, एक बार देखने के साथ ही कोई भी देखता है हमारी रिसर्च को, तो उसको दिखना चाहिए हाँ हाँ ये हुआ है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा शुड बी chosen very very systematically. कैसे प्रेजेंट करते हैं, टेक्सचुअल फॉर्मेट में, जैसे टेक्स्ट लिख दिया पूरा पूरा। So data are presented in sentences or paragraph. It is principal method for providing contextual information. In qualitative research, textual representation is the most important method of presentation of data, and in quantitative research, text reporting can be done while presenting indicators like rate, ratio, proportions, and for example, prevalence of PCOD, sex ratio, infant mortality rate. This kind of data can be presented in the textual format. This is the data collection in the form of table. This is just an example. This is frequency distribution, how we can present the data. This is in the form of diagram, how we can present in the form of diagram. जल्दी जल्दी बताता हूँ, क्योंकि बार डायग्राम हम लोग प्रेजेंट करते हैं, पाई और स्कैटर डायग्राम, पिक्टोग्राम, मैप, स्पॉटिंग. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ सिंपल डायग्राम. ठीक है, तो कोई भी डेटा रिप्रेजेंट किया, ये क्या दिखा रहा है, सिंपल बाय डायग्राम शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिलीजन. आउट ऑफ 100 पार्टिसिपेंट्स हिंदू कितने थे, मुस्लिम कितने थे, तो वो एक टेक्स्ट पे लिखने से अच्छा है अगर हम लोग इस बार में प्रेजेंट करेंगे, तो इसको बोलते हैं सिंपल बार डायग्राम. दूसरा होता है ये वाला, इसको बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम. इसमें क्या है, वी कैन यूज एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, एंड उसमें हम लोग we can categorize the data. So this kind of data also we can present multiple bar diagram. This is an example of multiple bar diagram, है ना, जिसमें हम लोग दिखा रहे हैं कि बीपी में लो निकोटीन डिपेंडेंस कितना है, मीडियम निकोटीन डिपेंडेंस कितना है. तो दिस इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. दिस इज कंपोनेंट बार डायग्राम, जहाँ पे डेटा हैज बीन स्टैक्ड, एक के ऊपर एक रख के दिखाया हुआ है. तो ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हैं, वॉट एवर वी आर गोइंग टू प्रेजेंट. Then pie diagram, we all know this is kind of representation कि एक सर्कल को हम लोग कटिंग करके फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में, या ऐसा ही कि हाउ मेनी मेल्स आर देयर, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, फीमेल्स आर देयर, और religion wise. This kind of data can be presented out of 100, how many percentage are there, that can be presented in the diagram like pie diagram. दूसरा होता है जिसको बोलते हैं डोनट चार्ट. डोनट चार्ट क्या होता है कि एक जैसे डोनट खाने वाला था उसमें ही, तो सेंट्रलाइज एरिया, देन आफ्टर दैट देयर इज एक्स्ट्रा सर्कल, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ बिग सर्कल. सो सर्वाइव में यू कैन सी यस एंड नो में भी इफ इट इज क्रू, इफ इट इज थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड इफ इट इज सर्वाइव में यस, तो कितने लोग क्रू थे, कितने फर्स्ट रैंक थे, कितने सेकंड रैंक थे, और कितने थर्ड रैंक के उसमें सर्वाइवर्स थे. तो इस काइंड ऑफ डेटा कैन बी प्रेजेंटेड. दिस इज पिक्टोग्राफ. पिक्चो मीन्स नाम से भी क्लियर हो रहा है कि पिक्चर्स जो होती है उसमें प्रेजेंट कर सकते हैं कि कितने लोग खाना कैसे कैसे खाते हैं. तो दिस इज सिंपली अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. दिस इज वेन डायग्राम. एवरीबडी नोज अबाउट वेन डायग्राम, कि जहाँ पे दो चीजें, तीन चीजें आपस में वहां पे एक जगह जाके मिल रही होती हैं. ईटिंग हेल्दी हैबिट्स, एब्सटिनेंस, नॉन स्मोकिंग, जहाँ पे कोलाइड करता है, तो दिस काइंड ऑफ डेटा वी कैन प्रेजेंट. स्पॉट मैप्स, डॉट 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 करके जहाँ पे भी स्पॉट मैप्स दिखा सकते हैं. देन देयर इज अ हिस्टोग्राम. दिस इज सिंपल हिस्टोग्राम, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कि हाउ वी कैन शो द फ्रीक्वेंसी, एंड आफ्टर द फ्रीक्वेंसी दिस विल डायरेक्टली शो द रिजल्ट्स. दिस इज फ्रीक्वेंसी कर्व विच कैन बी हाइट एंड फ्रीक्वेंसी. दिस इज लाइन चार्ट, एक एक्स एंड वाई एक्सिस में जस्ट वी आर joining the dots and we are presenting the data. This is cumulative frequency curve. This is showing the cumulative frequency, and that can be used ki how many problems can be solved by solving the this kind of suppose addressing the 5 to 6 problems only. This is scattered or dot diagram, which is also useful, and this is combined chart. इसको बोलते हैं Pareto chart. Pareto analysis में दिखाता है कि frequency and cumulative defects
सपोज हमारा पैथोलॉजी में, हमारा लैब में, है ना, कितने पर्सन्स प्रॉब्लम्स हैं, फिर हमारे ओपीडी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, फिर आईपीडी में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट करते हैं तो वी कैन सी कि हमारी जो 70% प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ 3 जगह हम लोग फोकस कर लें तो वो हमारी ठीक हो सकती हैं। सो दिस काइंड ऑफ जो पेरेटो एनालिसिस में करके वी कैन शो द statistical analysis and we can compare the results. Spider chart again, once this is heat map कि this will show with the color कि इतना temperature, इतना heat, और there are so many types of examples are there for the heat map. So this was the how the data are being collected. And now, but whenever we are collecting the data, so there should be some scales on which we can put the data and we can show the results. इसको भी मैं थोड़ा सा जल्दी लूंगा, जैसे नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है कि व्हेनेवर वी आर गिविंग जस्ट नॉर्म, नेम, जिसको बोलते हैं नॉमिन, यानी इट इज यूज्ड फॉर लेबलिंग वेरिएबल्स, रिकॉग्निशन ऑफ ए ग्रुप और इंडिविजुअल्स विदाउट एनी क्वांटिटेटिव वैल्यू। जहाँ पे क्वांटिटी नहीं है, जैसे किसी प्लेयर्स हैं हमारे पास बहुत सारे, तो प्लेयर्स को क्या करते हैं हम लोग, जर्सी नंबर 99, जर्सी नंबर 7 ऐसा दे देते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लेयर्स हैविंग जर्सी नंबर 99 इज always going to score more than 99 numbers or less than 99 numbers. This is just the nominal. This is called nominal data. फिर क्या होता है, नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल, जिसको बोलते हैं ऑर्डर में, है ना, ये वाला, दिस इज ये ordinal scale. Ordinal scales, it represents the order. That means the ordinal scale places events in order, but there is no attempt to make the intervals of the scale equal in terms of some rule कि first rank, third, second rank, third rank, fourth rank. This is just giving the order कि first पे कौन है, second पे कौन है, but first कितना ज्यादा है, कितना दूर है, ये नहीं बताता है. Ordinal measures have no absolute values and the real differences between adjacent ranks may not be equal. कि मतलब फर्स्ट रैंक वाला पर्सन है वो सेकंड से कितना दूर है, या थर्ड पर्सन उससे कितना दूर है. तो दिस इज जस्ट एन ऑर्डर. इट इज नॉट टेलिंग कि हाउ सीवियर इट इज, 2 times सीवियर और लेस टाइम, ऐसा करके ग्रेटर देन और लेसर देन. जस्ट it is implies a statement of greater than or lesser. And equality statement is also acceptable without or being able to state how much greater or less. How much नहीं बता रहा है, but बता रहा है कि greater or lesser, है ना. तो this is kind of known as ordinal scale. जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि in this, ये वाला ordinal scale, इसमें क्या होता है कि if a person is having no pain, mild pain, moderate, severe, very severe and worse. So this kind of data we can use and we can put it to the patient and we can collect कि before giving the medicine the pain was worse, and after giving the medicine the pain is now moderate or mild. So this is can be used, and this scale can be presented in the form of data and can be used in the statistical analysis. This is just an example of ordinal data. अब आता है इंटरवल स्केल. इंटरवल स्केल में क्या होता है, देयर इज अ पर्टिकुलर इंटरवल आर देयर, यानी जब से अच्छा इसका एग्जांपल है कि वो व्हाट वी आर यूजिंग द टेंपरेचर स्केल. Interval scale is quantitative measurement scale where there is an order. The difference between two variables is meaningful and equal. The presence of zero is arbitrary. यहाँ पे जीरो तो नहीं रहता है. जैसे सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस सेल्सियस स्केल. सेल्सियस स्केल जो होता है ये वाला, सेल्सियस स्केल जो होता है, डिफरेंस बिटवीन 190 इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 60 एंड 50, जो भी हम लोग टेम्परेचर थर्मामीटर यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे जीरो का मतलब ये नहीं है कि वो टेम्परेचर वहां पे हीट है ही नहीं, है ना. ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होता है. जैसे जीरो IQ डजंट मीन्स कि पर्सन इज हैविंग नो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, है ना, but it indicates a serious intellectual problem. इसके बाद एक और आता है जो मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट है, दैट इज कॉल्ड रेशियो स्केल.
रेशियो स्केल जो होता है वो बताता है कि रेशियो में चलता है, एंड रेशियो स्केल हैव सम एब्सोल्यूट और ट्रू जीरो। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका केल्विन स्केल। केल्विन स्केल इज द ओनली टेम्परेचर स्केल दैट फॉलोज रेशियो स्केल इन विच जीरो के मतलब जीरो an absolute absence of heat. Just zero plus indicates an absolute lack of pulse. यहाँ पे रेशियो स्केल जो अगर हम देखेंगे कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, तो सबसे अच्छा यहाँ माना गया है रेशियो स्केल। और जब भी हमें कोई ऐसा हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं तो समटाइम्स देयर इज अ क्वालिटेटिव डेटा। उस क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए वी कैन यूज सम स्केल्स। सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड लाइकर्ट स्केल, और दूसरा है 4.4 फॉर्मेट। अगला है डॉकेट स्केल एंड डॉकेट स्केल एंड विजुअल एनालॉग स्केल एंड सम अदर स्केल्स आर डिफरेंशियल एंड गटमन। सबसे पहले देखते हैं लाइकर्ट स्केल। लाइकर्ट स्केल इज सेम कि if we are putting some attitude of the person, if we are going to get, so it has been widely used to measure the customer feedback towards product. That means strongly disagree, neutral, agree, and strongly agree. So this kind of scales, we daily life, we are whenever we are going to any restaurant, so we have seen this kind of scales, Likert scale. दिस इज 4.4 फॉर्मेट। लाइकर्ट स्केल में क्या था कि वहां पे बीच में न्यूट्रल ऑप्शन दे रहे थे, लेकिन इफ समटाइम्स वी आर पुटिंग दिस स्केल टू ऑल द पॉपुलेशन, तो व्हाट विल हैपन, मोस्ट ऑफ द पर्सन इफ बिकॉज ऑफ some administrative issues they will put the neutral point, so that then again will be problem. Researchers what will do, so they will again there is a 4.4 format scale in which it is इसमें यहाँ पे मिडिल जो वाला था, न्यूट्रल वाला, वो हटा देते हैं। क्या रखते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री, एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री। सो दिस अगेन कैन बी यूज्ड 4.4 फॉर्मेट। अगला होता है डॉकर्ट स्केल। इट इज जस्ट लाइक लाइकर्ट स्केल। द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन रिजल्ट्स ऑफ टू स्केल्स आर कंपेयर्ड एंड डिस्कस्ड। अगला होता है विजुअल एनालॉग, जो बहुत सारी डिजीज में अभी हम लोग यूज करते हैं, सोरियासिस के केस में और बहुत सारी काइंड ऑफ डिजीज में, जहाँ के हम लोग बहुत सारा बायोकेमिकल टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे वी यूज दिस विजुअल एनालॉग स्केल, जहाँ पे दिखा सकते हैं कि नो पेन एट ऑल से लेकर वर्स्ट पेन इमेजिनेबल, उसमें 10 पॉइंट्स में उसको दे देते हैं। एंड अगेन वही 10 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स, यानी बिफोर the treatment and after the treatment. So then only we can compare with the help of this VAC, visual analog scale. Then differential scale or Thurston scale, it is again very easy to very difficult. So why I am telling this, because now we know the data, now we know the scales and how to put the data on the scale, and how we can use the data and scale, and how we can utilize this data for presenting our results in the रिसर्च। सो बेसिकली अभी इसमें क्या समझ में आया, सबसे अच्छा था रेशियो स्केल, उससे कम है इंटरवल स्केल, उससे कम है ऑर्डिनल स्केल, उससे कम है नॉमिनल स्केल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड स्केल। अब आता है हमारे पास कॉमन रिसर्च डिजाइन। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है मैं वही लूंगा, क्योंकि बहुत टाइम भी नहीं है। तो जैसे कि हमारे पास देयर आर डिफरेंट डिजाइंस आर देयर। It is basically qualitative and quantitative designs. Qualitative में क्या है कि जहाँ पे खाली हम लोग किसी फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं, या किसी का लाइकिंग डिसलाइकिंग जानना चाहते हैं, या एक कॉमन पब्लिक को वो चीज पसंद है कि नहीं पसंद है, वो दे विल यूज द वैक्सीन और नॉट, दे विल यूज दिस मेडिसिन और नॉट, तो दे आर कस्टम टू दिस दैट मॉस्किटो नेट काइंड ऑफ, जहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा मिल रहा है। क्वांटिटेटिव में वी कैन शो द एफिकेसी एंड एफिशिएंसी एंड वी कैन कंपेयर द रिजल्ट। वहाँ पे हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वहाँ पे कर सकते हैं। सबसे जो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में, दिस इज क्वालिटेटिव इज डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लोरिंग एंड एक्सप्लेनिंग अ फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। Nowadays they are being increasing used in biomedical research, primarily of study of the social, cultural, economic and political factors that influence health and disease.
as well as to understand human behavior, their concerns and motivations. तो ये हो गया हमारा क्वांटिटेटिव स्टडीज और क्वालिटेटिव स्टडीज. अब आता है दिस क्वांटिटेटिव स्टडीज में आर यूजफुल इन डेवलपिंग हाइपोथेसिस एंड फर्दर इवैल्यूएशन बाय एनालिटिकल मेथड्स. जैसा मैंने बताया था वहां पे हम लोग स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाकर उसको इफिकेसी इफेक्टिवनेस दिखाकर बोलते हैं नहीं नहीं ये चीज अच्छी है, ये चीज इसलिए अच्छी है. तो वहां पे क्वांटिटेटिव डिजाइन बनानी पड़ती है. अभी मैं इसमें न जाकर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो अच्छी जो स्टडी है क्वांटिटेटिव में ये सम कॉमन स्टडी डिजाइंस. ठीक है, कॉमन स्टडी डिजाइन इन अंडर द क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव में केस रिपोर्ट हो सकता है, केस सीरीज हो सकता है, इकोलॉजिकल स्टडी हो सकता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो सकता है, केस कंट्रोल, कोहॉर्ट एंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल. केस रिपोर्ट में जनरली जस्ट इट इज अ whenever we are studying a general population या case study of suppose when Vardhaman, suppose Kolkata, the common health practices in Kolkata, a case study, a case report. So this is kind of studies are going on. या एक अगर क्लिनिकल की बात करें तो क्लिनिकल में क्या होता है, एक छोटा सा कोई केस मिला और वो स्टडी किया कि यार this case has been reported and this is a new disease is coming. Then after that case series में क्या होता है, whatever case we are collecting and we are not putting any intervention or not putting any comparison, इसको बोल सकते हैं वहां पे कंट्रोल ना लगाकर हम लोग सिर्फ अपना जो दवाई दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं और ऐसे केस को इकट्ठा कर रहे हैं और कलेक्शन करने के बाद उसको प्रेजेंट कर रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड केस सीरीज. इकोलॉजिकल स्टडीज में क्या होता है कि जस्ट बेस्ड अपॉन कि वहां पे कॉमन पब्लिक का हैबिट्स हैं जो और उनका जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, तो दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल स्टडीज. उसमें इट मे बी डिस्क्रिप्टिव, इट मे बी एनालिटिकल. और अगला आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज. क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, एकदम क्रॉस सेक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हाउ मेनी पर्सन्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज. तो ये एक तरह से प्रिविलेंस बता देता है. अगला होता है केस कंट्रोल स्टडी. केस कंट्रोल स्टडी क्या होता है कि वो केस कंट्रोल लेकर हम लोग दिस इज वी आर गोइंग बिहाइंड, यहाँ पे हमें डिजीज मिल चुका है और उसका कॉज ढूंढते हैं. और इसका अगला होता है कोहॉर्ट स्टडी. कोहॉर्ट स्टडी में क्या होता है कि हम लोग कॉज पकड़ के आगे चलते हैं एंड दिस इज इन फ्यूचर वी आर गोइंग, दिस इज कॉल्ड कोहॉर्ट. एक पर्टिकुलर कोहॉर्ट है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको स्टडी कर रहे हैं और उनका आगे जाके जो कॉज है या जो उनका एक्सपोजर है उससे कोई डिजीज होगा कि नहीं होगा. दैट इज वेरी लॉन्ग स्टडी, दैट इज कोहॉर्ट स्टडी. एंड द फाइनेस्ट इज द RCT, दैट इज कॉल्ड रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल. ये बता चुका हूँ ऑलरेडी. इकोलॉजिकल स्टडीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और इसमें स्टडी करते हैं. क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इट्स अ प्रिवेलेंस स्टडीज, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये पर्टिकुलर डिजीज यहाँ पे प्रिवेल कर रही है, वहां पे द टोटल नंबर ऑफ केसेस सफरिंग फ्रॉम एनी disease, it may be new or old cases. So this kind of studies are known as cross sectional studies. ये इसका प्रेजेंटेशन है कि डिफाइंड पॉपुलेशन, डेट, डेटा ऑन एक्सपोजर एंड डिजीज. तो वहां पे हम लोग स्टडी करते हैं कि दिस काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज. दिस इज काइंड ऑफ प्रिवेलेंस स्टडीज. केस कंट्रोल में क्या होता है, वी आर स्टडिंग द retrospectively. It is a retrospective study because both exposure and outcome. एग्जाम्पल है कैंसर, लंग कैंसर का, कि जहाँ पे स्मोकिंग भी था और लंग कैंसर भी है, वो दोनों हो चुका है. तो हम लोग स्टडी करते हैं कि दोस्त पर्सन सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर वो कौन कौन स्मोकिंग करता था, बैक साइड में जाके स्टडी करते हैं ना. और उसी के लिए इसको कंपैरिजन करने के लिए वहां पे कंट्रोल लगते हैं. कंट्रोल मतलब दोज पर्सन विच आर not smoking. ठीक है. So that kind of studies is it is from effect to cause. ये है जैसे smokers which are having lung disease, lung cancer, smokers which are not having lung cancer. B, non-smokers जो कि सिगरेट नहीं पीते हैं but they are having lung cancer and controls, that means they are not having cancers. Non-smokers not having cancer. D. So इसमें क्या करेंगे, इंसिडेंस निकालने के लिए इसमें क्या होता है,
है। यहाँ पे अगर रो और कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे कॉलम में क्या हो गया, केसेस में स्मोकर्स ए, नॉन स्मोकर सी एंड टोटल हो गया A+C। ऐसा ही कंट्रोल्स में यानी पर्सन विदाउट लंग कैंसर में स्मोकर्स बी, नॉन स्मोकर्स डी एंड टोटल हो गया दिस B+D। तो इसमें क्या निकालते हैं ये कि among the lung cancer patients what is the percentage proportion of smokers, that is A/A+C into 100. Again in control group without lung cancer group, what is the percentage proportion of smokers, that is B/B+D into 100. So this kind of we can show the probability of the association. ठीक है, it is regarded as statistically significant, that is the probability of the association is not due to chance alone, यानी smoking has some relationship with the lung cancer. इसको टेस्ट कैसे करते हैं, टेस्ट करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट से। काई स्क्वायर में पी वैल्यू निकलती है, पी वैल्यू if it is equal or less than 0.05 then definitely smoking is having relation with the lung cancer, यानी जो लोग सिगरेट पीने उनको कैंसर होता है। इसमें ऑड्स रेशियो निकालते हैं। ऑड्स रेशियो इज आल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो एंड इट इज गिविंग द प्रिवेलेंस रेशियो। इफ इट इज ऑड्स रेशियो इज 1, exposure is not related to the disease, यानी उसका कोई मतलब नहीं है। if odd ratio is more than 1, exposure is positively related to the disease, and if odds ratio is less than 1 तो exposure is negatively related, यानी कि अगर वो सिगरेट पीता है तो लंग कैंसर ठीक होता है, तो वो इस तरह से वो दिखाता है। अगला होता है कोहॉर्ट स्टडी। कोहॉर्ट स्टडी में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पर्संस रहते हैं यानी कोहॉर्ट, उसको स्टडी करते हैं। इसमें हम लोग जाते हैं कॉज टू इफेक्ट स्टडी यानी फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे अभी स्मोकिंग जो लोग कर रहे हैं उनको हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको स्टडी करेंगे फॉर द लॉन्गर पीरियड, और उसमें लास्ट में जैसे आज 10 साल बाद 20 साल बाद देखेंगे वहां पे उनको कैंसर हुआ कि नहीं हुआ। सो दिस काइंड ऑफ स्टडी इज वेरी लॉन्ग स्टडी एंड दिस इज कॉल्ड द कोहॉर्ट स्टडी। ये ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट, रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट एंड कंबाइंड रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट। प्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, वी आर गोइंग फॉरवर्ड। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, वी कैन चूज टू स्टडी in terms of exposure outcome but your direction of inquiry is forwarded only। ये है कोहॉर्ट स्टडी का डिजाइन। जैसा कि कॉजेस टू इफेक्ट, हम लोग कॉज से देखकर यहाँ की पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ही इज स्मोकिंग एंड अल्टीमेटली जो हमारा जो आउटकम ऑफ इंटरेस्ट है वो डिजीज है वहां पे हो रही कि नहीं हो रही है। बेसिकली ये दिखाता है इंसिडेंस रेट, रिलेटिव रिस्क एंड एट्रीब्यूटेबल रिस्क, यानी स्मोकिंग इज एट्रीब्यूटेड टू लंग कैंसर, यानी अगर स्मोकिंग छोड़ देता है तो उसको लंग कैंसर नहीं होगा। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ स्टडी इज डेफिनेटली शोइंग द रिजल्ट्स। इन दिस कोहॉर्ट स्टडी like this we have to collect the data and you can see smokers with lung cancer, smokers without lung cancer and total is A+B। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रो में स्टडी होती है, रो वाइज आते हैं। ठीक है, नॉन स्मोकर्स विद लंग कैंसर, नॉन स्मोकर्स विदाउट लंग कैंसर, दिस टोटल इज C+D। तो इसमें जो है जो इंसिडेंस निकलेगा तो वो रहेगा हमारा रो में जाएगा A/A+B, ऐसा ही C/C+D। इस तरह से जो है हमारा इंसिडेंस निकलता है। दैट मीन्स इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर अमंग स्मोकर्स वो हो जाएगा A/A+B एंड इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर अमंग नॉन स्मोकर्स वो हो जाएगा C/C+D। इस तरह से ये रो में मूव करते हैं। यहाँ पे ये है, इस तरह से यहाँ पे मूव कर रहे हैं A/A+B मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड C/C+D, यानी इंसिडेंस रेट ऑफ लंग कैंसर अमंग नॉन स्मोकर्स। तो एक तरह से ये इंसिडेंस रेट निकालते हैं। आफ्टर इंसिडेंस रेट अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारा रिस्क रेशियो निकल आता है, दैट इज कॉल्ड RR। दैट मीन्स incidence of disease among exposed divided by incidence of disease among non। तो इससे एक रिस्क जो हमारा रेशियो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिस्क निकलता है। इफ RR इज लेस देन 1 दैट इज नेगेटिव एसोसिएशन, प्रोटेक्टिव है, यानी वहां पे क्या बोलेंगे, वो जो हमारा
कॉज है या एक्सपोजर है वो उसको प्रोटेक्टिव है. एंड इफ इट इज आर इज मोर देन वन, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव एसोसिएशन, दैट मीन्स कॉजल है, यानी उसमें वो करा रहा है. दैट मीन्स इंसिडेंट इज 2 times हायर अमंग एक्सपोज, यानी सिगरेट जो पीते हैं वो डबल टाइम्स उनको कैंसर होने का चांसेस है. सो दिस काइंड ऑफ रिलेटिव रिस्क इज वी कैन कंसीडर. कोआड स्टडी का अभी मैंने जाके टाइम कम है, तो मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देना चाहूंगा जो मेरे पास अभी लास्ट में देना चाहूंगा. एक और था आरसी, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो आजकल का सबसे अच्छा माना गया है कि वेन एवर वी आर डूइंग एनी क्लिनिकल स्टडी, तो वी हैव टू डू द सैम्पलिंग with the help of randomization, and we should, if we are giving some medicine, so we should have some control with that. एक मेडिसिन दे रहे हैं, उसके साथ साथ में अदर ग्रुप है, उसको हम लोग मेडिसिन नहीं दे रहे हैं या कोई दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो कंट्रोल बोला जाता है. तो यानी एक इंटरवेंशनल ग्रुप हो गया, एक कंट्रोल ग्रुप हो गया, वहां पे दोनों में कंपैरिजन किया जाता है. और क्या होता है वहां पे, जब हम उनको सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या है, रेंडमाइजेशन करते हैं. इट मे बी सिंपल रेंडमाइजेशन टेक्निक, इट मे बी स्ट्रेटा वाइज, इट मे बी ब्लॉक वाइज, तो वो अलग अलग तरह से यहाँ पे रेंडमाइजेशन कर सकते हैं. तो रेंडमाइजेशन करने से कि हमारा जो बायसनेस है कि हम इस आदमी को अपनी स्टडी में लेंगे, आदमी को मेडिसिन देंगे, इस आदमी को देंगे या उसको दूसरा में रखेंगे, तो वो एक बायसनेस रह जाती है. बायसनेस खत्म करने के लिए ही रेंडमाइजेशन किया जाता है. दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ स्टडीज आर मोर ऑथेंटिक, मोर यू कैन से एक्सेप्टेबल इफ रेंडमाइजेशन हैज बीन डन. तो ये छोटा सा एग्जांपल था रेंडमाइजेशन का. तो आरसीटीज आर अगेन वेरी वेरी गुड, एंड इसमें प्लेसिबो कंट्रोल, एक्टिव प्लेसिबो, डबल प्लेसिबो एंड नोसिबो. प्लेसिबो मतलब क्या होता है, एक तरफ मेडिसिन दी गई, दूसरी तरफ क्या गया, एक सिमिलर एक्टिव ट्रीटमेंट दिया गया जो कि उसको जैसा लगता है, लुक, शेप, कंसिस्टेंसी, कलर एंड टेस्ट में एकदम सेम लगता है, बट विदाउट एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. इट हेल्प्स इन द ब्लाइंडिंग. एक ग्रुप को मेडिसिन दी गई, एक को प्लेसिबो दिया गया, या एक्टिव प्लेसिबो. अगेन मैटर ऑफ डिस्कशन. एंड ब्लाइंडिंग करी जाती है यहाँ पे, जैसे सिंगल ब्लाइंड ट्रायल, डबल ब्लाइंड, ट्रिपल ब्लाइंड एंड शैम ट्रीटमेंट. सिंगल ब्लाइंड में क्या होता है, किस ग्रुप को मेडिसिन दी जा रही है, किसको नहीं जा रही है, इसमें पेशेंट होता है, जो पार्टिसिपेंट्स हमारे वो उनको पता नहीं होता है. डबल ब्लाइंड में क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट है वो किस ग्रुप में है, यानी मेडिसिन दी जा रही है या कंट्रोल ग्रुप में है, उनको पता नहीं होता है. एंड जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसको भी पता नहीं होता है. ट्रिपल ब्लाइंड में क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इन्वेस्टिगेटर एंड द पर्सन हु इज एनालाइजिंग द डेटा, he is also don't know कि which group having medicine, which group having the control group. So this is again very blind method. अब मैं स्लाइड दिखाऊंगा बस. Within 2 to 3 minutes I will finish my ये एक बहुत ही अच्छा स्टडी था जो आपको अभी तक का पूरा जिस्ट बता देगा. अभी वहां पे आया नहीं है मेन नेटवर्क पे. सो एक जो एक 1941 में देखा गया, एक केस देखा गया, दैट इज रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, यानी उसका जो आंख का लेंस था उसके पीछे फाइब्रस टिश्यूज एक्टिव हो गए थे, बन गए थे, और उसकी वजह से उसकी आंख डैमेज हो गई, यानी ब्लाइंडनेस हो गया. दैट इज इन द प्री मैच्योर बॉर्न बेबी. तो एक केस देखा गया, फिर बाद में देखा गया और लोगों को हो रहा है, तो उसमें फिर केस सीरीज स्टडी हुआ. केस सीरीज में जहाँ पे कि एक पीडियाट्रिशियन और एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट दोनों ने मिलकर स्टडी किया 117 नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पे, और वहां पे पूरा देखा कि यार ये वाकई में बच्चों को ब्लाइंडनेस हो जा रही है. फिर नेक्स्ट आया डिस्क्रिप्टिव स्टडीज. डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में देखा गया कि वहां पे 200 प्री मैच्योरली बॉर्न बेबीज को देखा गया, और देखा गया इनमें ऐसा हो क्यों रहा है. होने पे पता लगा कि वो जो भी हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है, दैट इज वेल आफ्टर द डिलीवरी. So the focus of interest shifted to the postnatal events, यानी बचपन से नहीं था, वो डिलीवरी के बाद ही हुआ है. This is disclosed after the this kind of descriptive studies. तब उन्होंने किया केस कंट्रोल स्टडी. केस कंट्रोल में क्या किया, उन्होंने केसेस रखा एंड कंट्रोल रखा. केसेस में क्या किया, उनको जब ये स्टडी की गई तो चिल्ड्रन डिलीवर्ड इन बॉस्टन आउट ऑफ 298 वर नॉर्मल एंड 53 वर afflicted with the retrolental fibroplasia. There was
co-occurrence of RLF and 47 factors. तो factors वहां पे देखा गया कि medicinal iron, water miscible vitamins, vitamin B deficiency and supplemental oxygen में कुछ ऐसा factor पाए गए जो blindness कर रहे थे. फिर उसी को फिर आगे चल के कॉसी एक्सपेरिमेंटल ट्रायल हुआ जिसमें जो पेशेंट्स थे कुछ को अलग किया गया, उनको दिया गया कंट्रोल्ड ऑक्सीजन और कुछ को अलग किया गया, उनको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन दिया गया. तो जिसको कंटिन्यूअस ऑक्सीजन दिया गया उनमें देखा गया कि जो ब्लाइंडनेस ज्यादा मिली, उनको डैमेज ज्यादा हुआ. जहां पे कंट्रोल्ड ऑक्सीजन दिया गया वहां पे ब्लाइंडनेस कम मिली. तो ये एक तरह से क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हुआ. उसके बाद किया गया RCT, randomized control trial, and this randomized control trial has proved that कि if a newborn baby is there, so we should give a controlled oxygen, that should be minimized oxygen to the baby. Otherwise, the damage will be more, and the because of there will be blindness. So this slide is beautifully showing the observation to experimentation, the historical saga of the research from the case study to the case series, descriptive studies, then case control studies, then quasi experimental and the randomized control trial. That means after randomized trial only we are able to say that all the babies who are prematurely born, that should be given controlled oxygen and that should be minimized oxygen. So this is the beauty of the research, I need to say. And after that, if it is we are talking about the evidence-based medicine, so evidence-based medicine में सबसे जो टॉप मोस्ट पे रखा गया है एविडेंस बेस्ड, उसको रखा गया है मेटा एनालिसिस को. मैं लास्ट में दिखाऊंगा स्लाइड ये वाला. इसमें आता है केस रिपोर्ट्स, ओपिनियन और आपका जो लैब स्टडीज हैं, उसके बाद एनिमल ट्रायल्स, उसके बाद क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, उसके बाद केस कंट्रोल स्टडीज, उसके बाद कोहॉर्ट स्टडीज एंड देन randomized control trials, and finally the systematic reviews and meta-analysis. So whatever we are doing, we should do in a well systematic manner, collecting the data, putting on the scales, and proper research design should be there, proper questionnaire should be there, proper tools and techniques should be there. Then only we can do a proper evidence-based research, and that will be implemented to the common public and persons. So start keeping good records of your evidence-based clinical cases and try to publish, because if it is not written down, it didn't happen. That means not documented, not done. So that was my takeaway message for today. Just think about research and types of research and data and scales and everything, and whatever you are doing, you should document it. So just going to the finalize. If you have any questions, you can ask me, or if time permits. And this is for all about today's presentation. And lastly, I would like to thank Neha ji and the whole team of HSSC and Anshu ma'am for giving me this opportunity to present my desired topic of research, and basic of research only I have given, because research is a very big topic and within 1 hour it can be touched even. I just given some words. That means now we can think of research. Thank you so much, Neha ma'am. Anybody has any questions from the participant side? Anybody? Any questions from sir? Yeah, definitely. I will share the slides. No, anybody has a question regarding anything, they can ask to sir. Otherwise, I'm going to ask. So, sir, I have a query. I have a question. Firstly, I want to say that was a perfect presentation about research, and it shows that how dedicated you are towards research things. Sir, I want to, one thing I'm in doubt, that how we decide that this topic is for research and this topic is not for research. How can you differentiate both these things? Suppose if we take any topic in homeopathy, if we take any new medicine, if you think, so how will you decide that it should go towards research or it should go towards the manufacturing side?
No, no, actually manufacturing is also kind of research. And if we have made any medicine, because if you're talking about manufacture of any medicine, so we have to collect so many of alkaloids and so many, maybe thousands of compounds are there. Out of those thousands of compounds, which compound is more effective? So 1,000 compounds से 500 से फिर 10 में से at least one आएगा. So that is a, if we are putting in that, this is a kind of clinical trial, जो कि प्री क्लिनिकल ट्रायल बोल सकते हैं. तो वहां पे क्या हुआ कि वो जो हमने एक कंपाउंड निकाला कि दिस कंपाउंड कैन बी यूज फॉर दिस काइंड ऑफ डिजीजेस, तो वो हो गया एक प्री क्लिनिकल ट्रायल. लेकिन अब उसको हम लोग यूज करेंगे फर्दर कि ये हमारा मेडिसिन के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारा फिर क्लिनिकल फेज में फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल आ जाता है. सो इट डिपेंड्स इफ यू आर, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि हमारे दिमाग में आया कि यार ये मेडिसिन काम करेगी नहीं कर रही है. जहां आपके दिमाग में आया यार ये हो सकता है कि नहीं, दैट मीन्स यू आर परफेक्ट टू डू द रिसर्च. तो रिसर्च कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज है, हुआ है. हम लोग सोचना पड़ेगा कि जस्ट हमको क्या करना है, और सिर्फ करने से नहीं होगा, फिर हमको उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जाना पड़ेगा. रिव्यू करने के बाद हमारा, जो मैंने बताया ना कि हमारा मेथड कैसे होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगा, कहाँ रिसर्च करेंगे, स्टडी डिजाइन क्या होगा, स्टडी सेटिंग क्या होगा, किस पे स्टडी करेंगे, हमारा इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या होगा. तो दैट डिपेंड्स. और थोड़ा थोड़ा पढ़ने पे ना समझ आ जाता है कि हम लोग कहाँ आगे बढ़ सकते हैं. तो रिसर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अगर ये दिमाग में आ रहा है, यानी कि डेफिनेटली आप रिसर्च कर सकते हैं. टॉपिक आप उठा के सोचिए कि वो टॉपिक जो है हमारा नोवल होना चाहिए, दैट शुड बी एप्लीकेबल टू द कॉमन पब्लिक, एंड दैट शुड बी फ्रूटफुल टू अदर्स, और वो पहले कभी हुआ भी ना हो, ये भी देखना पड़ेगा. सर ये बिल्कुल क्लियर किया आपने, समझ आया. तो आपने कहा क्लिनिकल रिसर्च 1, क्लिनिकल रिसर्च 2. सर अगर लगे कि पेशेंट को दवाई दे रहे हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो क्या वहीं के वहीं स्टॉप होगी ना वो रिसर्च, मतलब उस पर्टिकुलर पेशेंट पे, या फिर वो कंटिन्यू रहेगी वो मेडिसिन की क्लिनिकल रिसर्च? हाँ, वो होता है, वो एथिकल इश्यूज होते हैं. वॉट एवर इज देयर, अगर आपको इस रिसर्च ऐसा सोच भी रहा, मतलब आप, मतलब कि मतलब कोई भी ऐसा रिसर्च सोच रहे हैं हम लोग, तो उसमें ना सबसे पहले होता है कि हम एथिकल इश्यूज क्लियर कर लें. हमारी जो एथिकल कमेटी होती है उसको बता दें कि हमारा ये मेडिसिन हम देने जा रहे हैं, इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है, और वो पेशेंट को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है. और अगर पेशेंट में ऐसा साइड इफेक्ट आ रहा है, तो वहां पे हम लोग को या तो उसका एंटीडोट देना पड़ेगा, या वहीं पे रिसर्च रोकना भी पड़ सकता है. दूसरी बात ये है, इफ इट इज एथिकली इट इज क्लियर, तो वहां पे हमारा नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि पेशेंट को हम लोग बता चुके होते हैं. बट अगर वहां पे नुकसान हो रहा है तो डेफिनेटली वो वहां पे रोकना पड़ता है. और इवन ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारी मेडिसिन जो है क्लिनिकल फेज ट्रायल 1, 2, 3, 4 तक क्रॉस करने के बाद, यानी बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं, और वो भी वो मार्केट में, दैट इज कॉल्ड फेज 4 ट्रायल, मार्केट में वो चल रही है मेडिसिन, लेकिन देखा गया कि उस मेडिसिन से नुकसान हो रहा है, तो वो मेडिसिन पूरी पूरी बंद करनी पड़ी. इट मे बी वहां पे बिलियन ऑफ डॉलर्स वहां पे खर्चा हुआ है, लेकिन वहां पे हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हमारा एक लाइफ भी इंपॉर्टेंट है. तो वो पूरी पूरी मेडिसिन हमने देखा भी है हमारे स्ट्रीम में, आप उठा के देखेंगे कि विच मेडिसिन हैज बीन विथड्रॉन फ्रॉम द मार्केट बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट. तो बहुत सारे मेडिसिन ऐसा मिलेगा जो कि पूरा पूरा क्लिनिकल ट्रायल फेजेस पास करने के बाद भी मेडिसिन बंद किया गया है. ऐसा होता है. ओके सर, अब समझ आ गया. थैंक यू सो मच सर. Thank you participant so much from the side of healthcare sector skill council, and Dr. Shishir, it was an interactive session. आपने इतनी सारी अच्छी information दी. Thank you so much for that. Hope we'll connect you again for the seminars. Thank you so much. Thank you so much. I request कि start thinking of research. So we can leave, Neha ji. Yes sir, yes sir. Okay, thank you so much.